Characteristics of the stationary wave in a region. There are some characteristics like first, no net energy flow take place in any direction. When equal amplitude waves travel in opposite direction and superpose, then we will say no net energy flow take place because two waves have equal power, so they cancel each out. Second point, all particles between two successive nodes, that is one loop length, oscillate in same phase. Suppose I say this is the formation of the stationary wave like this. All the particles which are on the top surface like this, they have the tendency to move in the downward direction. All the particles which are on this bottom line, they have the tendency to move in the upward direction. So all particles between two successive nodes oscillate in the same phase. Third point, all particles on one side of a node in loop oscillate in opposite phase with those on the other side. Of course, ये दिख ही रहा है, इधर वाले पार्टिकल अगर नीचे जा रहे हैं तो इधर वाले पार्टिकल कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं. ठीक है. सो यहाँ से लेके यहाँ तक के सेम फेज में, यहाँ से लेके यहाँ तक के सेम फेज में, लेकिन अल्टीमेटली दीज ऑल एंड दीज ऑल आर इन अपोजिट फेज. लास्ट मैंने लिखा है ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन ऑफ द स्टेशनरी वेव all medium particles come in form a uniform straight line twice, because all of you know if it is the node, it is antinode, it is node, it is antinode and it is node. ठीक है. अब अगर वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है तो ये जो पार्टिकल है एक बार ऊपर जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर यहाँ आएगा. सो ऑल द मीडियम पार्टिकल कम इन फॉर्म ऑफ ए यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन ट्वाइस, यानी दो बार ये नोड के साथ आ गए तो दोनों स्ट्रेट लाइन में हो गए. So we will say during one oscillation of stationary wave, all medium particles come in form of uniform straight line twice.